नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। ओके, सॉरी एक तो फॉर द लास्ट सेशन वो नहीं हो सका क्योंकि आई वाज बिजी ऑन द वीकेंड। इंशाल्लाह आज कंटिन्यू करेंगे हम विद इडियम्स। पीछे जस्ट फॉर क्विक ओवरव्यू हमने हमने देखा था लास्ट दो सेशन जो थे हमारे इडियम्स पे हुए थे, सेकंड भी और थर्ड भी। फर्स्ट वाले और सेकंड वाला जो था उसमें हमने देखा था कुर्रत आयुन, एक इडियम देखा था हमने, फिर उसकी पूरी डेप्थ देखी थी कि कुर्रत आयुन, फुलनेस ऑफ द आईज, वो कुरान में कहाँ-कहाँ किस-किस तरह से यूज होता है, किस-किस मीनिंग्स में, किस-किस कॉन्टेक्स्ट में, एटिमोलॉजी क्या है, वो सारी हमने देखा था, उसको रिपीट नहीं किया। फिर जो हमारा थर्ड सेशन था, लास्ट जो सेशन हुआ असल में, दैट वाज हमने दो इडियम्स देखे थे उसमें। हमने देखा था अस्फनल्लाहु अयुनुहु अयुनुहु और दूसरा क्या था? अच्छा ये तो कुर्रत अयुन का ही है। हमने देखा था खफ़ज़ लहू जनाहहू कि लोअर योर विंग्स या रफ़अ लहू जनाहहू या रेज़ योर विंग्स। और हमने दूसरा देखा था वहलुल उक़दम मिन लिसानी कि अनटाई द नॉट फ्रॉम माय टंग। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। मेरा इरादा है कि 2 इंशाल्लाह आज भी हो जाए। तो इस इरादे के साथ चलते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे with the idiom अबरम अमरन फइन्ना मुबरिमून। ये आता है सूरत ज़ुख़रुफ़ में, ठीक है? वेट लेट मी शो माय स्क्रीन। दिस इज़ सूरह ज़ुख़रुफ़ आया 79, ठीक है? और इसमें असल में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कुरैश से या वैसे इन जनरल कुफ़ार से, और कह रहे हैं कि अबरमू अमरन, हैव दे डिसाइडेड, हैव दे टाइड द नॉट। अब्रमू कहते हैं टू टाई, ठीक है? अब्रमू अमरन, हैव दे डिसाइडेड, हैव दे टाइड, फइन्ना मुबरिमून, इफ दैट इज सो देन वी हैव टाइड एज वेल, ठीक है? क्या वो अपनी गिरह बांध चुके हैं? अगर वो बांध चुके हैं फइन्ना मुबरिमून, तो फिर हम भी बांध चुके हैं यकीनन, ठीक है? अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी surface level translation, right? Now what does abramu mean in essence? What is abramu? Before modern times, before construction was with concrete and bricks and mortar and everything, so they used to do construction with beams, sticks, pillars, beams. Something really strong, something with a lot of tensile strength. Or they used to bundle a bunch together, a bunch of sticks, a bunch of bamboo sticks together or something, and they would tie it up. Okay? And that was their means of construction. That's how they constructed beams. The way they tied those together, that is what abramu means. Abram, right? Abrama का मतलब होता है to really securely, tightly tie it down. क्योंकि obviously when you're tying something for construction, you're gonna want it to be super tight. You don't want it to come loose. You don't want it to be, easily undoable क्योंकि that's gonna cost lives. Construction है ना, कोई अगर किसी का गिर गया तो that's gonna be deadly, right? So there's a difference. There's different kinds of tying. You can tie a shoelace or you can tie a beam for construction, right? A shoelace is temporary. A beam for construction is permanent. ठीक? तो abrama means to really strongly, permanently tie down something. ठीक? अच्छा, अल्लाह ताला इनसे पूछ रहे हैं कुफार से, abramu, have they tied? Have they tied their knot? ठीक? If they have, this is implicit basically. فإنا مبرم. असल में अल्फाज ये है कि if have they tied their knot, then indeed we have tied as well. ठीक? क्या वो बांध चुके हैं? क्या वो गिरा लगा चुके हैं? बस हम भी गिरा लगा चुके हैं. So it's basically implied कि if their answer is yes, if they have done so, then we have done so as well.
अच्छा, अब what does tying the knot means here? What does tying the knot mean? यहाँ पे असल में tying the knot is referring to have they made up their minds? Like, have they are they completely sure in their decisions, in their steadfastness to kufr? Are they completely sure that they want to be stubborn and they want to deny Allah and His Messenger and His commandments and His book and everything? ठीक? Are they sure? Have they completely, certainly, permanently made up their minds? If yes, if so, then Allah says, so we have as well. Then so have we. ठीक? فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Then indeed we have died as well. अच्छा, एक तो यहाँ पे ये बात आ गई कि Allah never steals someone's heart as a preemptive measure. ठीक? Allah knows कि कौन हिदायत पाने वाला है और कौन हिदायत पाने वाला नहीं है. अल्लाह नोज कि किसकी आखिरत किसका अंजाम क्या होगा. लेकिन फिर भी इंसाफ का और इस दुनियावी अदल का तकाजा ये है कि प्रियम्पशन में अल्लाह ताला इस तरह को कोई अमर नहीं करते. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इफ दे हैव डिसाइडेड, if they are firm in their decision, if they are not going to concede, they are not going to accept, they're not going to do anything, then so are we. ठीक, यानी कि first step has to be taken by them, right? अच्छा, ये तो हो गया कि the beginning. They have to be sure first, and then we will seal their hearts. Then we will tie the knot. Okay. लेकिन एक चीज नोट करने वाली. Anyone who knows even a little bit of Arabic ना, let me show you the ayah again. You know कि अबरम is a verb, फेल माजी है, right? लेकिन मुबरिमून जो है ये नाउन है. दिस इज अ इसम और इस्मुल मफूल है, और सॉरी इस्मुल फाइल है कि जो द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द वर्ब. ठीक. अच्छा, अरबी का एक उस्लूब ये है कि a verb, no matter what the meaning of the verb is, in some sense using a verb versus a noun shows uh, temporariness versus permanence. ठीक. तो a verb signals that something is temporary. एक चीज हो गई, खत्म हो गई. ठीक. ये एक चीज है, अभी के लिए है, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए. ठीक. Even though the word itself actually, abrama itself means permanently tying something down. लेकिन जब in general एक verb की connotation और एक noun की connotation को Arabic में देखा जाता है ना, तो have they tied and Allah is also the tire. فإنا मुबरिमून का डायरेक्ट अगर मैं वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करूं बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर बनेगा फइन्ना, then indeed we, मुबरिमून are the tires of the knot. We are the one who tied. ठीक. तो असल में this is a noun used here, and a noun in just Arabic, in the Arabic language denotes या connotes um, permanence, like absolute permanence. ठीक? There is a difference between saying he smokes and he is a smoker. ठीक है? He smokes, he might smoke once in a while every now and then. Yeah, he might smoke now or he might not have been smoking for a very long time. ठीक है? लेकिन he is a smoker का मतलब he is a regular smoker, he always smokes, he never stops smoking, right? तो this is the difference essentially. एक glimpse to मैंने English की उससे दे तो दी, but in actuality Arabic is a lot more firm in its constructs. Arabic में a noun is very straightforwardly more permanent than a verb. ठीक. तो यहाँ पे it's sort of a signal कि Allah is saying if have they decided, और उनके decision के लिए एक word, एक verb use हो रहा है ना, and a verb is naturally impermanent, it's temporary, right?
एंड अल्लाह के अमर के अल्लाह के ट्राई करने के लिए नाउन यूज हो रहा है, नाउन इज परमानेंट, मीनिंग इवन दो उनको अभी लग रहा है कि दे आर फर्म इन देयर डिसीजन, इनको अभी लग रहा है कि they are sure in their decision, they will not want to change, they will not want to reconsider, they are completely firm on their choice. लेकिन कुरान में आता है कि रुब्बमा यवद्दु الذين كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين they didn't sorry, there will be like eventually there will be a day soon, will the time come कि the people who disbelieve, they will wish they were Muslims, they will wish they had accepted and believed in Allah. So this is again referring to the day of judgment, Yawm al-Qiyamah. Even though someone may be very determined in their disbelief right now in this world, ठीक है, कोई कट्टर से कट्टर काफिर हो, कोई complete devout atheist हो, like नहीं मानता तो नहीं मानता, ठीक है, but on the day of judgment, what will be shown to them and what will be shown to each and every one of us, there will be no room left for disbelief. Each and every person on that day will believe. Lekin by that time, belief will have become something not very valuable क्योंकि belief after seeing is no belief at all. ठीक है, हम ये बात किया करते हैं कि अगर अच्छा दिस इज वन ऑफ कुछ स्कॉलर्स ने ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट रेज किया है कि अगर अल्लाह के होने की कोई कतई दलील, एंड बाय कतई आई मीन कोई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कट थ्रोट सॉलिड undeniable proof मिल गया, like actual proof that cannot in any way be challenged, तो फिर ये टेस्ट खत्म हो गया ना, आजमाइश खत्म हो गई, there is no longer uh, belief, there's no longer tawakkul, there's no longer iman, it's just fact now, it's truth. Yeah, you don't need to be given evidence, या अच्छा एक तो ये गलत एग्जांपल गलत हो गई, but it doesn't, if you ask someone do they believe in the sun, uh, you don't need to believe in the sun exists na, you see it every day, rose uh, it rises and rose it sets, there is no point of belief in something that is for certain, that is undeniable, that has undeniable proof. तो ये एक आर्गुमेंट स्कॉलर्स यूज करते हैं ये कहने के लिए कि यू कैन नॉट एक्चुअली हैव 100% undeniable credible evidence for the existence of God, ठीक है, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर दुनिया का मकसद खत्म हो गया, आजमाइश खत्म हो गई, देयर इज नो मोर टेस्ट, ठीक, इसलिए there will always be a certain part of belief जो कि गैब पे है, अनसीन पे है, ठीक, इसीलिए उसमें आता है ना कि ईमान मुफस्सिल में आता है, ये बल्कि नहीं, आई एम मिक्सिंग समथिंग अप, बट लाइक ईमान बिल गैब एसेंशियली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम ना, आपका ईमान उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता कि मैंने अनदेखे पर भी ईमान लाता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं उसको प्रूव कर सकता, मैं नहीं उसको कुछ और कर सकता, लेकिन उस पे ईमान लाना दैट इज ट्रू ईमान। मेरा इस पेंसिल की एग्जिस्टेंस पे ईमान ईमान नहीं है, मेरे सामने है, मैं इसे लिखता हूँ, मेरे हाथ में है, क्या क्या बिलीव करूंगी, एग्जिस्ट करती है, हाँ आई वेरी मच बिलीव, देयर इज नो डाउट इन मी, बिलीव यार हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करती हो, मतलब मे बी दिस इज जस्ट अ हेलुसिनेशन ऑफ मी इन अ वेरी लॉन्ग टर्म हेलुसिनेशन, जिसको रोज मैं पाउच में रखता हूँ, अपने रोज पाउच से निकालता हूँ और फिर से कुछ लिख भी लेता हूँ और जो लिखता हूँ वही मेरी कॉपी पे रहता है, मतलब दैट्स स्टूपिड राइट, तो आई डोंट नीड बिलीफ इन दिस जस्ट इज, दिस इज ट्रूथ, ठीक, तो अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे, गैब पे, फरिश्तों पे,
जन्नत जहन्नम पे आखिरत पे यू नीड बिलीफ। ठीक। तो सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए। तो एक्चुअली बात ये हो रही थी कि उस दिन तो हर कोई ईमान ले आएगा। उस दिन तो हर कोई मान लेगा। It won't be belief in the unseen anymore because you will be seeing everything happen in front of you. You will see Jannat and Jahannam. You will see mountains floating like cotton. You will see the sun come right up above your heads. You will see the seas turn red and then boil. ठीक? तो after seeing that, you can't really deny it anymore. ठीक? तो इसलिए यहाँ पे the word Allah uses when He talks about the kuffar is a verb. Is a verb. A verb signals temporariness. And the word Allah uses for His own not dying, that is permanence. That is a noun. A noun signals permanence. أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Okay, since they did not want to be guided, since they did not want to be to come to the right path, to accept the truth, since they were being stubborn, then Allah made their decision permanent. When they decided for sure, when they were firm in their hearts, कि यही हमने इससे नहीं हिलना. Allah was like, okay, fine, ये चाहिए, ये लो. Allah was like, now there's no return for you. والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah does not give guidance to a disbelieving people. Fasiq, disbelieving is a very incomplete translation of fasiq, but for the sake of translation, that's about it, right? So this is about أبرموا أمرا فإنا مبرمون. And like this is the kind of thing जो you cannot find in translation. ठीक? Translation अबरमू को भी वही translate करेगी तो मुबरिमून को करेगी. ठीक है? You cannot understand this depth until you understand Arabic. Matlab, you won't know the difference in connotation between a verb and a noun until you study Arabic. You just won't know it. ठीक है? So this is something you need Arabic for. You need Arabic to understand the true depth, the true nuance of the Quran. उसके बगैर मजा ही नहीं है कुरान में. What are you even reading in the Quran? I mean, you can repeat those ayat, but again, you lose the big picture. कि ओ अल्लाह ने यहाँ पे ये बात की, इस खूबसूरती से की, और I had no idea, right? तो खैर, moving on to the next idiom हमारे पास जो है. अच्छा, by the way, I hope you guys take notes for this क्योंकि this is some really interesting stuff और you guys should have this handy. कभी आपको मौका मिले किसी ऐसी जगह पे बैठ के बात करने का, मतलब in friends or in just in associates and peers, कहीं पे आपको कुरान की कोई बात करने का मौका मिल जाए, तो you should have content, you should have some knowledge on hand कि you never know आपने कहाँ पे क्या बात मतलब even insignificantly कर दी और किसके दिल में वो बात वहां से बैठ गई और उसने बात कहाँ तक पहुंचेगी, यू जस्ट कैन नॉट नो. ठीक है? वो आपके लिए यौमुल आखिरा पे आपका जब रजिस्टर खुलेगा और जब आपको एक एक छोटी छोटी नेकी बहुत अजीज होगी कि यार किसी तरह मेरा बैलेंस हो जाए स्केल, उस टाइम पे just imagine the amount of happiness you'll get if you look at your register and you see like a long chain of good deeds just starting from the fact कि वो मैंने फला बंदे के सामने एक कुरान का एक ये लफ्ज बयान कर दिया था, एक लफ्ज बयान कर दिया था जो उस बंदे के दिल में कहीं बैठ गया और उसने शायद दो लोगों को कहीं और बताया हो और उन दो में से किसी एक ने किसी अपने एक और दोस्त को बता दिया हो और इस तरह ये चेन चलते 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 ये बात जितने लोगों तक पहुंची उसका अजर आपके अकाउंट में. हाउ मतलब आपको अल्लाह की
गिना के बारे में, अल्लाह कितना गनी है, अल्लाह कितना जेनरस है, इसके बारे में और क्या दलील दूँ मैं आपको कि अल्लाह इज़ लाइक फॉरगेट। ऐसा नहीं है कि ओह! अगर मैंने आपको कुछ सिखाया और आपने आज किसी और को बताया, तो जी आपको जो रिवॉर्ड था वो कम मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा, 1 परसेंटेज मुझे मिलती रहेगी। रॉयल्टी आपके उसमें से कम होगी, मुझे मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपको आपका पूरा और उसमें से एक हिस्सा मेरा भी, राइट? अल्लाह इज़ लाइक दुकान खुली है यार, लॉटरी लगी हुई है, लिटरली लॉटरी लगी हुई है। देयर इज़ नो एंड व्हाट्सोएवर। मतलब हम दुनिया में बात करते हैं ना, वो किसी एक स्कॉलर ने बड़ी मज़े की बात की थी। कहते हैं हम ना इस दुनिया में बचा-बचा के रखते हैं इन बैंक्स लिमिटेड में, हबीब बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, यू नो जितने भी बैंक्स हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। क्यों ना अपनी सेविंग्स बचा के रखो अल्लाह's बैंक अनलिमिटेड में। वहाँ कोई वो नहीं है कि जी अच्छा आपने इतने जमा कराए थे तो आपको बस इतने ही मिलेंगे। और वो दुकान, आपको पता है कुरान में एक जगह आता है, मैं एक्चुअली वो आयत खोलता हूँ, वो आयत बहुत खूबसूरत आयत है, मुझे बहुत पसंद है वो। सूरह बकरा की गालिबन आयत है वो। Let me find- इतनी खूबसूरत आयत है ना वो, इतनी प्यारी इमेजरी है उसकी कि you're like सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह ने क्या बात किधर से निकाली और उसको किधर करके छोड़ा। Let me show it to you guys. 2261, ये सूरह बकरा की आयत है, आयत 261 गालिबन। एक बार खुल जाएगा, I'll show you guys. Hmm. And I'm sorry, I'm sort of going off track here, but you guys should really see this. This is a very good resource. मतलब ये कभी बार ना आपको बैठे-बैठे एक चीज़ कहीं से कनेक्ट होती है, तो अल्लाह ने ना उसमें भी एक बड़ी तासीर रखी है कि आज एक नेचुरल फ्लो ना, कुरान कोई बात कहाँ से कहाँ ले जाता है और वो आपको एंड में लगता है कि ओह मैंने वहाँ से शुरू किया था, बात यहाँ पहुँच गई। बट खैर बात कुरान की है तो उसमें अल्लाह ने एक अपनी तासीर रखी है। खैर, दिस इज सूरह बकरा 261। मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, कि the example of those people who give their wealth, who spend their wealth in the way of Allah। ठीक है, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह फी सबीलिल्लाह अपना माल खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सीड हो, ठीक, एक दाना हो, अम्बतत सबअ सनाबिला, और उसमें से उगे, उसमें से अल्लाह ताला उगाए 7 सनाबिल। सनाबिल सुम्बुल की जमा है, और सुम्बुल कहते हैं इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है ईयर्स ऑफ ग्रेन। ये कहते हैं खोशा होता है ना, खोशा, वो कि बेसिकली व्हीट जिस तरह ग्रो होती है, किसी ने गंदुम उगती हुई देखी है? गंदुम लाइक उन मुझे कोई और लफ्ज़ सामने नहीं आ रहा, झाड़ू की तरह से उसमें उगती है, बट लाइक झाड़ू इज़ अ वेरी derogatory word for गंदुम, बट लाइक उसकी सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस टाइप होती हैं, राइट? उनको कहते हैं सुम्बुल, ठीक है? तो उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, एक दाने की बराबर है, एक दाने की जैसी है। अम्बतत सबअ सनाबिला, जिसमें से 7 सुम्बुलें, 7 वो शाखें, खोशा, 7 खोशे उगते हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिन, और हर सुम्बुल में से, हर खोशे में से मिअतु मिअतु हब्बा, 100 दाने मज़ीद निकलते हैं।
तो यानी कि क्या हुआ, 100 दाने एक खोशे में और 7 खोशे। आपने जो खर्च किया अल्लाह की राह में, और युनफिक मतलब इन्फाक, कुरान की अलग अलग जगहों से और लें तो उसमें सिर्फ माल खर्च करना नहीं होता, उसमें और बहुत सी चीजें आती हैं। तो उसकी मिसाल क्या है कि 700 टाइम्स वो आपको बढ़ा के दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह इसमें मजीद इजाफा करता है जिसके लिए वो चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीर। मतलब आप देख रहे हैं इस, क्या तो आपको खुशखबरियां कोई इस दुनिया में सुनाएगा कि जी आपका फला जगह पे एडमिशन हो गया और आपकी फला जगह जॉब लग गई, आपको कुरान सुना रहा है कि यार आप माल खर्च करो अल्लाह की राह में, उसका रिवॉर्ड ऐसा मिलेगा कि वो एक दाना जो आपने माल खर्च किया है, उस एक दाने में से 7 शाखें निकलेंगी, उस हर एक एक शाख पे 100 दाने होंगे, 700 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद मजीद वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह उसे बढ़ा देगा जिसको, वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह बहुत वसी है। अल्लाह, ये बात असल में मैं कर रहा था कि अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं कि क्या आपको किस बात का डर है? क्या क्या यहाँ पे आप क्या ले लोगे यार? आप बहुत अच्छे से अच्छे बैंक में, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दोगे पैसे, कितना मिल जाएगा? मतलब साल का 20%, 25%, बहुत हाई चल जाओ 50% आपको मिल जाए। वह आपने लाख रुपए डाले, आपको 1.5 लाख रुपए मिल गए। भाई 700 गुना मिल रहा है इधर। तो थोड़ा सा पे अपनी ना वैल्यूज को, अपने मॉरल्स को, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला क्या ऑफर कर रहे हैं और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, राइट? खैर, मूविंग ऑन। अब द नेक्स्ट वन इज सूरह शुअरा की ये आयत है, और बात शुअरा की हो रही है, पोएट्स की हो रही है। ठीक है, उनके बारे में क्या कहते हैं? अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, कि have you not seen them, do you not see them, how they go into every valley, how they roam about, how they wander about in every valley। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, या मेन हम फोकस करेंगे इस लफ्ज पे, यही मून पे। ठीक। हामा यही मून, जो इसका रूट मतलब वर्ब जो है वो है हामा यही मून। हामा यही मून यूज होता है किसी कैमल को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत प्यासा कैमल है, और वो मतलब बिल्कुल एमलेसली, बिल्कुल दिमाग दिमाग सब साइड पे रख के पागलों की तरह इधर से उधर घूमे जा रहे हैं पानी की तलाश में एक सहरा में। वो उसको डिस्क्राइब, उसके लिए वर्ड यूज होता है हामा यहीमो। ठीक है, तो एमलेस वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ समथिंग। फिर इसी से निकला है लफ्ज अल हियाम। ठीक। अल हियाम असल में यूज होता है फॉर लव, लेकिन नॉट जस्ट एनी लव। अल हियाम, अच्छा, अरबिक में, अरब्स में ना, इन जनरल अरब लिटरेचर में देयर आर 10 stages of love, और अल हियाम इज द 10th stage of love, and it is a deadly kind of love। ठीक। तो someone who commits suicide in, like, because of love, that is al hiyam। ठीक है, someone who goes into severe depression and starts self-harming, या starts some kind of self uh, self-destructive behaviors, that is al-hiyam। ठीक। A mother whose child goes missing, and the mother refuses to eat, refuses to sleep, refuses to do anything, that is al-hiyam। ठीक। तो it's a deadly kind of love, it's a very deteriorating, it's a very destructive kind of love, it becomes a disease at that point। ठीक है। अच्छा, इसी ज़मन में लव की उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो अल हियाम तो इज द 10th स्टेज ऑफ लव, डेडली लव। उससे बिल्कुल पहले द 9th स्टेज ऑफ लव इज वला, वाव लाम हा, वला। ठीक। एंड
Al-wala, your wala is basically it's so let me give you a bit of a tiny Arabic lesson. Arabic में हमजा, वाव और या ये तीन हरूफ जो हैं इनको हरूफ इल्लत कहते हैं, ठीक। अच्छा, इनका क्या है कि वन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि ये जब किसी थ्री लेटर रूट में आ जाए ना, तो हमने थ्री लेटर रूट्स पढ़े थे ना, जिस तरह हमने जब कुर्रत आयुन पढ़ा था, हमने कहा था कौफ रो और रो कुर्रता का थ्री लेटर रूट है। हमने ऊपर मुबरिमून पढ़ा या अबरोमू पढ़ा, तो इसका थ्री लेटर रूट है बा रो मीम, बारोमा, ठीक है। बारोमा से अबरोमू, अबरोमा और फिर उससे अबरोमू और मुबरिमून, ठीक है। तो यहाँ पे यही मून का जो सॉरी वला का वला की बात करें ना, वला का थ्री लेटर रूट इज वाव लाम हा, ठीक। इट्स अ थ्री लेटर रूट इटसेल्फ। और हम जब कहते हैं कि जब किसी वर्ड के थ्री लेटर रूट में, उसके मेन रूट में जब कोई हरूफ इल्लत आ जाए, तो जो बाकी, अच्छा अब लेट्स से यहाँ पे वाव लाम हा है ना, तो वाव लाम हा की जगह इस वाव, जो वाव हरूफ इल्लत है, अलिफ वाव और या हरूफ इल्लत होते हैं ना, इस एक हरूफ इल्लत को आप किसी और हरूफ इल्लत से रिप्लेस कर दें, अगर वो भी कोई लफ्ज ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है ना अरबिक में, तो इनके मानों में आपस में कोई कनेक्शन होगा। दे विल बी सिमिलर एंड ऑफ द सेम कॉन्टेक्स्ट, यूजिंग द सेम कॉन्टेक्स्ट, यूजिंग द सेम मीनिंग समवॉट, ठीक। तो वला में वाव की जगह पे अलिफ लगा दें या हमजा लगा दें, तो बन जाएगा इलाह, ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला इलाह, ठीक। तो एंड व्हाट इज ला इलाहा इल्लल्लाह, इट इज मतलब कि देयर इज नो, अच्छा इलाह के साथ भी ना हम बड़ी ज्यादती करते हैं उर्दू में, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, लाइक कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, which is not necessarily wrong, but again Arabic is such a meaning dense and such a rich language कि there is a very vast meaning behind ilah। और ये बात गालिबन समर वाले सेशन में बड़ी डिटेल से हुई थी कि इलाह का मानी और इबादत के मानी, इबादत असल में है क्या, ठीक है। तो I'll just give you a bit of just a touch of it कि एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि इबादत इज असल में a, a sum of two things. It is इताअत, obedience plus मोहब्बत, love, ठीक है। love and obedience combined is इबादत, ठीक। अच्छा, तो हम वला की बात करते हैं, वला इज essentially the ninth stage of love और it is the same context as इलाह। इलाह में भी क्योंकि इबादत के का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो इलाह में भी वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव वाला मीनिंग आता है, ठीक। तो और अल वला असल में वला की मीनिंग होते हैं जो नाइन्थ स्टेज ऑफ लव, उसको थोड़ी सी एक्सपेंशन में जाए, एक्सप्लेनेशन में, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ पेनलेस लव, ठीक। वो आपको भुला देता है कि इन व्हाट पेन यू आर या इन व्हाट व्हाट यू नीड, वो आपको उसमें से कुछ किसी चीज के बारे में सोचने नहीं देता, ठीक। इट इज अ वेरी फुलफिलिंग लव। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज हमने याद है फर्स्ट सेशन में ये सेकंड सेशन कुरान आयन वाले में हमने एग्जांपल दी थी दो मदर्स की, एक डिपार्चर टर्मिनल पे है और उसका बेटा कहीं जा रहा है, और एक अराइवल टर्मिनल पे है और उसका बेटा कहीं से आ रहा है। तो अराइवल वाली मदर, उसका बेटा कहीं से आ रहा है, ठीक। अब उस माँ को उसने खाना ना खाया हो, उसको भूख लगी हो, उसको वॉशरूम जाना हो, उसकी तबीयत खराब हो, कुछ हो जाए, इस मोहब्बत में वो सब भूल जाएगी कि मेरा बेटा आ रहा है। इसमें उसको कुछ याद नहीं रहेगा कि उसको भूख लग रही थी या उसको फीवर था या उसकी तबीयत खराब थी या उसके पेट में दर्द था, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इट इज अ फुलफिलिंग काइंड ऑफ लव। इट फ्रीज यू फ्रॉम ऑल पेन, इट फ्रीज यू फ्रॉम ऑल डिस्कम्फर्ट। आपको सब भुला देता है, लाइक बस ये, राइट। उर्दू में थोड़ा सा ये वर्ड गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज होने लगा है, लेकिन एक
सुरूर, एक मस्ती है उस लव में, राइट? कि आपको बिल्कुल अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। दैट इज अलवला। खैर, अलवला के हम टेंजेंट पे चले गए, वो एक बात अलग निकल गई। बट कमिंग बैक टू अल-हियाम, तो इफ यू डोंट वांट टू डाई, अलवला इज द हाईएस्ट यू कैन गो। ठीक। द और मज़े की बात यहाँ पे ये बात नोट करने वाली कि इलाह में भी ना, इबादत में भी, अल्लाह की इबादत में फिर ये फुलफिलमेंट होनी चाहिए हमारे लिए, ये पेनलेसनेस होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक। आप वसल्लम को मैंने आई थिंक ये बात गलबन लास्ट उसमें की थी, तो अभी उनके उसमें मैंने की थी कि आप वसल्लम फरमाते थे कि मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में रख दी गई है, राइट? क्यों? क्योंकि आप वसल्लम का जितना मुश्किल मिशन, जितनी मुश्किल जिंदगी, उस सब के बाद एक आपको कंफर्ट देने के लिए, एक फुलफिलमेंट देने के लिए, वो सब पेन दूर करने के लिए आपके लिए नमाज रख दी गई रात की, जी तहज्जुद में खड़े हुए। क्यों? Why was that? It was to do with this fulfilling kind of love. क्योंकि उनका अल्लाह से जो ताल्लुक था, और जो एक मोमेंट का अल्लाह से ताल्लुक होना चाहिए इन इट्स ट्रू एसेंस, वो ये होना चाहिए कि मैं बाहर से कट मर के गालियां सुन के, अपने लोगों को अपने सामने मरता देख के, टॉर्चर किया जाता देख के, मैं बाहर से आ रहा हूँ जहाँ एक तरफ सुमैया को शहीद किया जा रहा था और दूसरी तरफ खबाब को चलते कोयलों पर लटाया जा रहा था, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं वापस आके रात को अल्लाह के हुजूर में खड़ा हूँ कि उस इबादत में और उस नमाज में जो एक फुलफिलमेंट है ना, वो ज़रूरी है। आप अगर ये काम करते हैं और इस काम का हक अदा करते हैं, आज की बात करो, आपके और मेरे लिए बात करो, अगर आप दावत का काम की काम का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, और आई एम गारंटी यू, आई एम नो वन, ठीक है, मैं शायद 1% भी नहीं कर रहा, ठीक, तो आई हैव नो राइट टू से दिस टू एनीवन एल्स, दिस इज प्राइमरली अ रिमाइंडर फॉर मी। अगर आप इस काम का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, तो यू विल नीड दैट सपोर्ट, यू विल नीड दैट रिलीफ, यू विल नीड दैट कंफर्ट, जो आपको ये इबादत देगी। इसके बगैर ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर आप वो काम करना चाहते हैं, दुनिया आपको नहीं करने देगी, ये आपको तोड़ के छोड़ेगी। कुछ कर लो, ये नहीं हो सकता। ठीक। तो उस काम के लिए, उस मिशन के लिए, उन खास लोगों के लिए फिर ये खास वक्त, ये खास कंफर्ट, ये खास मुसर्रत, खास राहत रखी है अल्लाह ने, इस चीज में आओ, दिन भर की मुश्किलात बेयर करके रात को मेरे पास आओ, तो फिर वो हालात होंगे। आप वसल्लम जो कहते हैं ना कि मैं रातें अपने रब के पास गुजारता हूँ, मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, तो वो ये होता है। एक्चुअली में नहीं खाना आ रहा होता था, वो ये फुलफिलमेंट होती थी जो अलवला से आ रही होती थी। ठीक। तो खैर, अलवला हो गया, वापस अलियाम पे आते हैं, बहुत लंबा टेंजेंट हो गया। ठीक। तो हम बात करते हैं कि डेडली लव, तो यानी कि इस अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, जब हमने बात शुरू की थी कि यू do you not see them, do you not see the poets going into every valley, wandering aimlessly, हमने camels वाला मीनिंग लिया ना हामा यहीमू का, they wander aimlessly in every valley and, अच्छा अब ये वाला जो मीनिंग है डेडली लव वाला, ये कहाँ आएगा? अच्छा, ये समझो कि वैली, व्हाट इज द इमेजरी अराउंड अ वैली? अ वैली एक तो इज लो, वैली के अराउंड माउंटेन्स होते हैं, टू गो इनटू अ वैली यू हैव टू गो डाउन। ठीक। अच्छा, एक तो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, यू आर लूजिंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ऊपर से यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ, नीचे से उस वैली में से
your field of view, your perspective is tiny, you cannot see. एक दूसरी चीज, metaphorically speaking, going from high to low is a sign of humiliation, of disrespect, of losing value, right? तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये आता है, you may be able to, अच्छा, just in the imagery of a valley क्योंकि it is down, so there may be a way to go down, to go into the valley, but there may not always be a way out. ठीक है, क्योंकि going down, gravity will help you. You can jump here, you can take a step there, you can sort of hang and stuff. उतर तो गए आप, अब वापस ऊपर चढ़ना, there may not always be a way up out of a valley. सही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप उतर तो गए। और लास्ट पॉइंट, यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ, कुल्ली वादिन, every valley, fi kulli वादिन, in every valley they go down, ठीक। अच्छा, कुल्ली वादिन इज नकेरा, इसमें नकेरा है, कॉमन नाउन, hence it implies every valley. They do not specify oh, this valley or not that valley. Nothing. It is every valley, each and every valley. They're not being specific. So essentially, you don't know कि उस वैली में क्या डेंजर्स हो सकते हैं। हो सकता है उसमें स्नेक्स हो सकता है उसमें स्कॉर्पियंस हो सकता है उसमें कोई जंगली जानवर हो, एंड यू मे नॉट बी एबल टू एस्केप इट, ठीक। तो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, पोएट्स क्या कर रहे हैं, they're going blindly head first into, and aimlessly mind you, उसमें कोई aim नहीं है उनका नीचे जाके, it's just blind, कोई फायदा नहीं है, into every valley where there may be danger, where there may not be a way out, and where they are humiliating themselves going down into this valley. अच्छा ना, यहाँ पे अल्लाह का असल में मकसद ये कहना नहीं है कि the poets are going hiking या the poets like hiking, ठीक। what is being said here, असल में what Allah is saying is, अच्छा, इसके लिए पहले ना समझने की जरूरत है कि what function poets played in that society. Poets असल में उनके entire entertainment industry जो है ना हमारी आज, उस टाइम पे it was poets. आपकी मूवी इंडस्ट्री आज, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री आज, and additionally also your philosophers, but philosophy में हम बाद में आएंगे, mainly आपकी entertainment industry जो है ना, your movies, your music, all of that at that time was shu'ara, was poets. So if you want to see a movie, there were no cinemas. So what you would do was you would go out at night into the desert, और कहीं किसी जगह पे आग जला के चार लोग बैठे होंगे और एक बंदा अपनी शायरी सुना रहा होगा, and you will essentially be painting a picture in your head, oh ऐसा हुआ था, that is your movie. Same thing with music, with concerts, ठीक है, आपने किसी concert पे जाना है, there are no concerts, so what do, you go to a poetry session जहाँ पे थोड़ा खास rhyming या music के साथ जैसा भी, there's poetry essentially. That was poets, that was their entire entertainment industry. अच्छा, compare that to आज की entertainment industry. How does आज की entertainment industry work? कोई एक आर्टिस्ट एक सॉन्ग रिलीज करता है या करती है, there's major hype about it, लोग पागल हो जाते हैं, लोग ऑन रिपीट सुन रहे हैं, मतलब बैक टू बैक स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट और यूट्यूब की प्लेलिस्ट और पता नहीं कितने हजार MP3 डाउनलोड्स और फला फला फला। एक टाइम तो सीडीज बिकने और सीडीज होती नहीं, तो it's people are going crazy over it, उसकी हाइप इज इनसेन। और उसके बाद मतलब हाउ लॉन्ग डज दैट क्रेज, डज दैट हाइप लास्ट, बहुत होता है 3-4 हफ्ते,
वो बहुत हिट गया, 2 महीने चल जाएगा। ठीक, 2 महीने के बाद वही लोग जो ऑन डे वन उसको रिपीट पे सुन रहे थे, बाय द सेकंड मंथ देयर लाइक खुदा के वास्ते मत करो, अब नहीं, बस दिल भर गया, राइट, अब नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, कुछ और लगाना। तो दैट क्रेज वो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है, एंड दे बॉटम। अच्छा, ऑडियंस को दे वांट समथिंग न्यू, दे गेट टायर्ड ऑफ द सेम थिंग, दे वांट समथिंग न्यू ईच टाइम। और जो आर्टिस्ट होते हैं, दे लिव ऑफ ऑफ देयर ऑडियंस, they live off of that fame, that constant dopamine rush कि ओ मुझे लोग सुन रहे हैं, मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, you know, मैं मुझ पे फोकस, आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन के लिए, it's very big, उनकी जिंदगी का पर्पस इज दैट। तो when the audience wants something new, उनका एक सॉन्ग बड़ा हिट गया, बिल बोर्ड्स रीच किए, टॉप 10 बिल बोर्ड्स में, और फिर people want something new, तो they release their next song, their next movie, whatever, and it flops. People are like नहीं यार, वो जो पहले वाले में मजा था ना वो अब नहीं। तो वो बंदा जो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा था अपनी अपने लास्ट वाले फेम के थोड़े कम होने से, जब लोग थक गए थे ना उसको सुन सुन के, वो बंदा जो ऑलरेडी थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा था, अब ये देख के कि उसका नया वाले हमने बिल्कुल हिट नहीं किया, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, गोज फर्दर, वो डिप्रेशन की एक वैली में उतर जाता है। अच्छा, अब they're like, अच्छा, I need to try something new, something different now, something, ये काम नहीं कर रहा, let's try something different. They go into a valley, they reinvent themselves, ठीक, और अगेन वो भी अक्सर और बेशतर काम नहीं करता, people just उस आर्टिस्ट की वाइब, वो एक हाइप खत्म हो जाती है, it's shifted to someone else, right? There is a very common phenomena in the entertainment industry, एक आर्टिस्ट या एक एक्टर या उसकी एक हाइप खत्म हुई, अब just order the next person, वो उस पे नहीं रहना चाहते ऑडियंस, that person goes into depression, उसको होती है बस यार मेरी, like how do I get it back, because they crave it ना, वो एक dopamine hit जो है ना उस fame का, उस recognition का, उस attention का, that is very addictive, so they really crave it। और उसके बाद क्या होता है कि they're like okay, अगर ये नहीं चल रहा तो maybe, just maybe, I can do something scandalous, I can do something just disgusting, इतनी disgusting कि चलो मेरा नाम अगर क्या कहते हैं अवार्ड शोज में नहीं लिया जाएगा, तो एटलीस्ट टैबलॉइड्स तो मुझ पे बात करेंगे, राइट, एटलीस्ट फेसबुक और ट्विटर पे तो मेरे बारे में डिबेट चलती रहेगी, राइट, किसी तरह से कहीं से कोई अटेंशन मिल जाए, डेस्परेट फॉर इट, राइट, और फिर सम स्कैंडलस न्यूज कम्स आउट कि किसी का किसी के साथ बहुत अजीब सा अफेयर चला, या someone went out on drugs, someone OD'd, they shaved their head, they hit someone in their car, they were drunk and they crashed their car, something absolutely horrible. सारी की सारी attention comes back to negative attention, but still attention, ठीक है, वो उर्दू में कहावत है ना कि बदनाम भी होंगे तो नाम तो रहेगा, तो that's basically their thinking कि यार बदनाम ही हो लेकिन नाम रहे, एक फेम रहे, एक हमारी हम पे attention, we should remain the focus, the center of attention, और फिर what they will start doing, another way to gain back attention, और जो उस टाइम पे किया करते थे, जो एक्चुअल अरब शुआरा किया करते थे, कि उनकी स्टैंडर्ड पोएट्री को अटेंशन नहीं मिल रही होती थी, तो दे स्टार्टेड राइटिंग डर्टी पोएट्री, लाइक एक्चुअली डर्टी फिल्थी पोएट्री, देयर लाइक अगर अच्छी नहीं सुन रहे तो शायद गंदी सुन रहे,
तो तारीफ ना भी करें लेकिन सुनेंगे तो ना, बातें तो करेंगे मेरे बारे में. That's what they started doing. So they were like, we'll reinvent ourselves. Or every time they reinvented themselves, they went to a new low. Standard fell and fell and fell and fell, right? Until it became so low, it could not fall anymore. और the thing is कि when जब entertainment industry के standard fall करना शुरू करता है ना, तो society as a whole का moral standard fall करना शुरू करता है. The entertainment industry never goes down alone. Society as a whole को वो नीचे लेके आती है. And you can see this actually in action. अगर आप even recent literature या pick the music industry, ठीक है, गाना नहीं सुनने चाहिए, but for analysis sake, um, you start looking at songs and stuff, या ghazlein, whatever, from 50 years ago, then look at them 40 years ago, then 30 years ago, then 20 years ago, then 10 years ago, and then now. Okay? Analyze those things, compare those things, and you will see a gradual degradation, a deterioration of standards. कि एक जो चीज शाइस्तगी से बात की जाती थी, एक जो खूबसूरती होती थी किसी चीज की, वो सब खत्म करके उस सबको आपने रिप्लेस किया with utter nonsense, just absolute crap. ठीक, that is just a natural progression of the entertainment industry. ऐसा ही चलता है, उस टाइम पे भी ऐसे ही चलता था, आज भी ऐसे ही चलता है. ठीक, और ऐसा इसलिए चलता है because there is no purpose. There's no purpose in their life. The only purpose these people have in their lives is the audience, the attention, the fame. हमारा तस्करा होता है. ठीक? और it holds true for modern day celebrities as well. ठीक? They live for the fans and the fans live for them. मतलब उनका अपना, उन एंटरटेनर्स का, उन शोरा का, उन म्यूजिशियंस, उन सिंगर्स, उन एक्टर्स का अपना तो चलो साइड पर रखो, वो तो एक बंदा है ना, बट उसके पीछे इतनी अवाम पागल है. Everyone wants to be like them. Everyone wants to live like them. Everyone looks up to them. You're like, what even? What even? मतलब, these are your standards? ये लोग, these people are who set the standards for you. ये जो term influencer की आई है ना, they actually are influencers. Or they are consistently, absolutely ruining the standards of our community as a whole, और खास तौर पे our youth, you and me at this point. ठीक, मतलब I remember मैं, अच्छा, I am a debater, तो MUN reception में मेरा जाना होता है ना, हम लोग एक MUN पे गए थे, और उसमें लाइक कमेटी सेशंस के बाद आई थिंक ऑन डे 2 हसन रहीम का कॉन्सर्ट था. The amount of people I saw crazy on that day of the MUN, क्योंकि उन्होंने रूल ये बनाया था कि you couldn't come just at the time of the concert, you couldn't just join the concert. अगर आपने concert attend करना है तो you have to be present at in the morning at the time the committee session start. तो आपको सारे committee session attend करने पड़ते थे. I would say nearly half the people in my committee session, in my room, were just there for the concert. उनका debate से कोई लेना देना नहीं था. उनको कभी चेयर खड़ा करके कुछ कह भी जाता था कि यार ओके यू स्पीक ऑन द टॉपिक, उनको अलिफ बे नहीं पता होती क्या चल रहा था. दे वर solely there for the concert. और ये लोग 5,000-5,000 रुपए दे के आए हुए थे to attend one concert. पागल हुए हुए थे. मतलब I was exiting जब concert को start हो रहा था, and I saw people crazily trying to climb onto the stage. I was like, what even? What even have we come to? कि the problem is not कि the people, the influencers themselves have no purpose. It's that the people, the youth, the fans have no purpose either. They just want to blindly follow these people as well. They're like, I want this in my life. This is what we have lost. This is what the problem with standards of the society falling is. It kabhi bhi, when the standards of the entertainment industry fall, they don't just affect the entertainment industry, they affect
everyone. They affect the entire society. Community as a whole is affected. ठीक? तो ये तो बात हो गई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। अच्छा, फिर मैंने एक बात और की थी कि what one more thing were the poets. They were the shu'ara, they were the philosophers. They were the philosophy teachers at their versions of universities. ठीक? अच्छा, consider modern day philosophers. What do they, अगर किसी का पाला पड़ा है philosopher से, तो most modern day philosophers, एक तो when you look at them you'll be like, what even? They're weirdly dressed. They are they say weird things. They look at you always. They're like, it looks like they haven't washed their face. They don't comb their hair. They don't wear proper clothes. They're just like, you're like, what even? Who even is this person? ठीक? And खास तौर पे in Western philosophy, which is basically आजकल की formal philosophy, या आप मतलब academia में philosophy अगर लेते हैं, तो 99% of today's philosophy is modern philosophy, Western philosophy. उनका the number one thing they want to instill in you is that there is no absolute truth. This is the one thing they will all try to tell you. कि there is no absolute truth. Truth is relative. आपका truth अलग हो सकता है, मेरा truth अलग हो सकता है. ठीक? Quran says no. Al-Haq is separate and Batil is separate. There is absolute truth and absolute falsehood. Truth is not relative. ऐसा नहीं है कि एक चीज आज moral है और एक चीज आज सही है क्योंकि हम सबको सही लगती है, और आज से 50 साल बाद जाके इमोरल या गलत हो जाएगी क्योंकि उन लोगों को सही नहीं लगेगी. If the Islamic point of view does not accept a relativistic moral position, which is the most concerning part of आज की modern philosophy ना. लोग कहते हैं कि जी आपकी moral basis जो है, आपकी moral जो आप सारे morals अपनी values ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं 1400 साल पुराने लोगों से. आप कैसे 1400 साल पहले एक अलग कम्युनिटी थी, आज एक अलग कम्युनिटी है, आज लोग अलग हैं, इंसान इतनी तरक्की कर ली है, आप उनसे कैसे अपने मॉरल्स ले सकते हैं? हम उनसे ऐसे अपने मॉरल्स ले सकते हैं क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि मॉरल्स चेंज ओवर टाइम. मॉरल्स आर फिक्स्ड. ये चीज गलत है तो वो आज भी गलत है, 1400 साल पहले भी गलत थी और 1400 साल बाद भी गलत रहेगी. और एक चीज आज सही है तो वो 1400 साल पहले भी सही थी और 1400 साल बाद भी सही रहेगी. ठीक है? Islam does not subscribe to this relativistic moral position कि ओ अगर ज्यादातर लोगों को सही लगती है तो सही है, ज्यादातर लोगों को गलत लगती है तो. We do not agree with that. That is absolutely stupid. ठीक है? खैर, तो essentially this is what modern philosophy will try to instill in you कि there is no absolute truth. Truth is relative. ठीक? और the thing is they live in the world of what if. हमारे एक टीचर थे. अच्छा, he had studied philosophy ना, he was an MPhil. तो वो कहते हैं कि मैं अपने मतलब when I started philosophy और when I मतलब मैं अपने टीचर्स के साथ, he studied abroad in the US. तो कहते हैं कुछ फैकल्टी के साथ मेरा वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो they live in such absurd worlds of what if. You're like, क्या बोल रहे हो, सोच के तो बोलो. राइट? तो कहते हैं एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, what if your Quran, नहीं क्या कहते हैं, your Quran was sent by aliens, and like they're really smart aliens, and they're now looking down upon you and they're laughing. You're like, what? So I just said, no, it's not.
तो वो फिलोसफर कहते हैं what if, वो कहते हैं it's just not right. Like how stupid do you have to be to go that low, to go that, कहते हैं what if your prophet never existed and this was all a really elaborate hoax devised by someone 200 years ago? You're like, are you stupid or are you stupid? Like, what even are you? Matlab, this is what this ayah means. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. They go into every valley. You pull them out of one valley, they go into the next. You pull them out of that one, they go into the next. Valley after valley after valley. You see? तो हमारे टीचर्स को बड़े खूबसूरती से बयान कर देते हैं, कहते हैं philosophers live in the world of what if. The Quran teaches us to live in the world of what is. ठीक है? We don't live in hypotheticals. We live in what actually is. Quran में अल्लाह ताला बार बार भी emphasize कि look, observe, देखो, सोचो, हो क्या रहा है. Actually, لعلكم يتفكرون. Maybe you know use your brains a bit. Maybe you think about it. Maybe you ponder on it. لعلكم تعقلون. Maybe you use your aql a bit. Right? So this is what essentially it means to be, to live in what is as opposed to what if. Or the problem is that we as Muslims have failed to teach our generations, to teach our youth how to think. सोचना कैसे है, how to critically think and analyze and question and answer. हमने अपनी youth को नहीं सिखाया, unfortunately. अब होता क्या है कि when these people, they take these questions, when they take a Muslim youth who is studying physics or biology or chemistry or engineering, और उससे जाके पूछते हैं, do you really believe in a flying horse that took your prophet to the heavens? So because we have not taught our youth the way to think, the philosophy to uphold, the way to look at the world, क्योंकि हमने वो नहीं सिखाया, our youth is lost at these questions. ये तो अपनी उन वैलीज में जा रहे हैं, ठीक है, वो तो फी कुल्ली वादिन यहीमून है, लेकिन they are pulling our youth in with them. This, ये youth का काम was not to follow them into valleys. The youth's purpose was to pull people out of valleys. और हम यहाँ फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि we don't know how to think. We don't know what to think. We don't know how to look at the world, with what lens to analyze this existence, this plane of existence in. हमें नहीं पता. हम इतने conflicting worlds में जी रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है how to make sense of this. हमें एक तरफ पढ़ाया जा रहा है कि ये ऐसे 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 होता है, साइंस पढ़ाई जा रही है कि जी इंसान बंदर था और फिर बंदर से ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ पूरा खड़ा हो गया, इंसान बन गया, और यू नो दुनिया ऐसे बनी और ये हुआ. Because we do not know how to reconcile that, इसलिए the Muslim youth is A, so far from deen, so far from Islam, and B, they're irritated when you talk about Islam. They're like, what mythology are you talking about? Because at this point, it actually is mythology. No? To the youth, Islam is just the same as Greek mythology. Greeks used to believe in their mythology, उनको उसमें कोई doubt तो नहीं था, but it was just mythology. मतलब वो सिर्फ एक अकीदे की हद तक था ना कि बस ठीक है, we believe in, we accept कि ये ऐसा है. We don't know how, we don't know what to think about it, we don't know how to relate it with the world,
बट ये ऐसा है, that is us, that is Muslim youth today, and solely for the reason कि हमें पता ही नहीं how to think. We have not been taught how to think. तो खैर, this is something I'm trying to work on for myself and for the people around me. This effort, this session, these series are a part of that effort. We collectively learn how to think and how to interpret both the Quran and this world and science. So may Allah give me the strength to truly fulfill this purpose, and may Allah give you the strength to understand what I mean to portray and to then carry forward this task. खैर आज के लिए इतना ही. Already we're a bit over the time limit, घंटे से ऊपर हो गया. So if there are any questions, please, if you're watching this on YouTube, please leave them in the comments. Yeah, if you have my contact info, text me. If any one of you want to be added to the group जो इस series का चल रहा है, the group chat, please comment or text me or whatever, just let me know and I will add you there. That is all I have for now. If there are any questions, please do let me know. Thank you so much for the time. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.